Hello everyone, my name is Lovely Tripathi and I'll be taking your second series of lecture for social issues which actually forms part of your paper 2, and we have certain topics related to social justice which form part of your paper 2, and social issues, yeah, Indian society forms part of your paper 1. So basically we'll be taking up two topics or two topics from your UPSC mains syllabus. The first is the social issues, okay, out of which there are various topics which are present in paper 1 and paper 2 both, and then the second subtopic is social justice, okay, which basically forms part of your paper 2. So this the first topic that we'll be taking up under the social issues lecture would be the role of NGOs in a democracy. So role of NGOs in a democracy. Now this particular topic is actually present in your paper 2, okay, basically it is present in your paper 2, and so now we'll begin with this lecture. So what is an NGO? Basically you must have heard of an NGO. There are like many NGOs for which you might have even worked for various NGOs in your college and school life, or so these NGOs you must have heard. It's not a very unheard topic, okay, you must have heard, but here we will study the details about NGOs and the self-help groups, etc., because what their role, what actual role do these NGOs play in a society, we will study in detail about that. Okay, basically we just know that okay, they are involved in some kind of humanitarian and welfare works. Okay, NGOs are known for being involved in humanitarian sorts of work, but in reality what is the issues which are facing these NGOs, and what are the various kind of contributions these NGO make to the society, in detail we will study about all those aspects. So basically if we start with what is an NGO, so as the name suggests, it is a non-governmental organization. Okay, so it is a legally constituted organization, but it operates independently from the government. There is no government representation as far as the constitution of an NGO is concerned. Okay, whenever an NGO is formed, it might be funded partially from the government, or it might not be funded by the government, but it will never have any representation from the government. It will operate independent from the government, and that is why it is known for its characteristics, because if it will work under pressure from the government, then what is the use of separate organization? Basically that is why it is called as a non-governmental organization. Okay, because see, as far as government is concerned, there are a lot of tasks which are responsibility of the government of any country, but these NGOs are actually working parallelly to the government, and there are a lot of actually works, humanitarian and welfare works, which are not reaching the needy section of the society. So these NGOs are working in collaboration with the government, though they are working independently, but there is some sort of collaboration obviously, because many of these NGOs are even funded by the government, and they are working parallel in the society to actually provide services and various kind of works, and various kind of humanitarian works and various kind of services are provided by these NGOs to the different section of society wherein the government has not been able to reach. So basically it is working for the development of the society. NGOs are working for the development of the society. They are working alongside the government, independent from the government, though they have a good collaboration from the government, so that those services and those activities which are required by the needy section of the society, that can be fulfilled. Okay, so there are various purposes for which, and there are various specific objectives for these NGOs are formed, and they are working for meeting or fulfilling those objectives basically. So you have to understand that. So basically it's an organization only. Okay, so what they are non-state, non-profit oriented groups. See, basically अगर कोई भी गवर्नमेंट का एंटिटी होता है या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसका मेनली जो गोल रहता है, दैट इज टू गेन प्रॉफिट. But NGOs are basically working for non-profits. Their goal or their sole objective is not just to make money or not just to gain monetary benefits. Okay, their purpose is to serve the society. The main objective for which the NGOs are formed is actually to serve the society. Okay, pursue purposes of public interest. So basically they are working for serving public interest. Primary objective of NGOs is to provide social justice, development and human rights.
So basically their approach is welfareist, and they are not working to gain monetary gains or just to gain profits. Like जो भी गवर्नमेंट एंटिटी होती हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, बट उनका एक जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो होता है टू गेन प्रॉफिट ऑल्सो फॉर देमसेल्व्स. बट एनजीओ इज वर्किंग जस्ट फॉर द वेलफेयर. जो ऑब्जेक्टिव होता है एनजीओ का इज जस्ट टू सर्व द पीपल and not to gain any monetary profits. And these are the names of various NGOs like Give India, okay, Helpage India, Smile Foundation. You must have heard of many NGOs around you also. You might have even worked for one or two NGOs, so you might have some experience regarding an NGO. But these are the banners of certain famous NGOs which are working at present in India. Okay, whether it is Smile Foundation, which is working for children, Helpage India, as you can see by the name only, it is helping for the old and the destitute people. Then Give India. These are various kind of NGOs, or three banners of three NGOs basically which are working at present in India. Now what are the different names of an NGO? So NGO is also called by the name of civil society organization, because there are, see, NGO is just one of the part of civil society organizations. There are a lot of other civil society organizations also which are working, but NGO is also called as a civil society organization only. It is one of the many civil society organizations. Okay, it is also called as a charitable organizations, because many a times NGOs are formed out of funds which are received through charity. So obviously NGO is also called as a charitable organization. Voluntary organization, why? Because it, those people who are associated with an NGO, it is there voluntarily, they are actually submitting to work for an NGO. It is not an obligation on them. They are themselves coming and participating and becoming part of an NGO. They are giving voluntarily, they are serving the country. Voluntarily service they are providing, and that is why an NGO is also called as a voluntary organization, because it's not an obligation for those people who are associated with an NGO. It's not an obligation for them. They are voluntarily, they are coming and serving for the country. They are providing those services voluntarily, and that is why NGOs are also called as voluntary organizations. Okay, so in this topic slide, we saw what is the primary objective of an NGO. What is an NGO? It is working independently from the government, means there is no government representation. It's not that the government funds are not involved. There are normally many kind of NGOs which are directly or indirectly funded by the government also, but then the government doesn't interfere in the working of an NGO. Why? Because then what is this purpose of forming an NGO? Because actually it is a non-governmental organization only. It will never have any representation from the government. There will be no personnel who is working in NGO should not be from a government organization. So basically this is how they maintain their independent status. Okay, and also their operations are not affected from any kind of government thing, so they are working parallel to the government only. Okay, then continuing from that, Indian NGOs basically they come under three segments. Now what are the various kind of NGOs? They could be in the form of societies or trusts or even charitable companies. Okay, so they could be registered as societies or trusts or charitable companies. If they are formed as societies, they have to register themselves under Societies Registration Act of 1860. If they are registering themselves as trust, then private trusts are registered under Central Government's Indian Trust Act of 1882. So whether you are forming, if you are forming an NGO, it has to be register itself as any one of these three segments, either as societies, trusts or charitable companies. Okay. Now there are two legislations which are legislated on a national level, which are actually regulating the functioning of these NGOs, and they are the one most important two laws which are connected with the functioning of NGOs in our country. And those two legislations are FCRA, which is Foreign Contribution Regulation Act, and Foreign Exchange Management Act, FEMA. So these are two laws which are actually dealing with the functioning of NGOs in our country. What is their role and what is the legislation, what are the provisions of these particular acts, that we will see in the later slides. But for the beginning, you have to understand that these are two laws which are dealing with the functioning of NGOs. NGOs किन कौन से एरिया में काम करते हैं, या कौन सा उनके बेसिकली एरिया ऑफ फंक्शनिंग क्या क्या है NGOs के. सो दे वर्क इन द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट की
कंजर्वेशन के लिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी स्कीम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, टू कंजर्व द इन्वायरमेंट, टू work for the welfare of the environment, NGOs are there. So various kind of activities या initiatives वो carry out करते रहते हैं, like for example planting of trees, and then various other conservation efforts जो environment को लेकर हो सकते हैं, protection of environment के लिए हो सकते हैं, वो NGOs carry out करते रहते हैं. तो ये जितने भी ये areas mentioned हैं, these are the domain of functioning of the NGOs. Okay, they work for even the health benefits. Okay, like health for the old and elderly. They work for the health of women and children, जो vulnerable population has of society का, like the women and children, the poor people, the old age and the elderly, उन तक health benefits पहुंच सके उसके लिए भी NGOs वर्क करते हैं. एजुकेशन अवेयरनेस है, एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए भी NGOs वर्क करते हैं. देन ऑल्सो दे आर वर्किंग फॉर पीस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, टू प्रमोट दी गुड ह्यूमन राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के लिए अवेयर करने के लिए वर्क करते हैं. एंड ऑल्सो दे आर फाइटिंग फॉर विमेंस राइट्स, and they are even involved in every minute field of social change. So basically this is the area of functioning. So एक broad way में एक हमने idea लिया कि NGOs हैं क्या, कौन कौन से laws हैं जो NGOs से deal करते हैं इंडिया में, and NGOs के जो area of functioning है वो क्या क्या है. NGOs जो हैं basically they are funded totally or they are funded partly by governments, but they maintain their non-governmental status obviously by excluding government representatives from any kind of membership in their organization. So this we have studied. Okay, now what is the broad role of NGOs in our society? That is, what is their contribution to the society? You have to understand. Like here also there is an image of, you can say, a particular NGO which is called as a Cares Foundation, Sugandh. Okay, the name of this particular NGO in this image you can see is Sugandh Foundation, and it is actually working for the empowerment or education of girls. Okay, and what is their motto? Girls are the base of life, educate them and empower them. So basically these are various kind of NGOs, and there are apart from this NGO which I have mentioned over here, there are a lot of other NGOs also which are working for the upliftment of the vulnerable section of society. They are working for the welfare of relief and rehabilitation of various destitute people, of people who have suffered any kind of atrocities or injustice in life. They are working to even rehabilitate those people also. They are working for the education of the माइनर विमेन एंड गर्ल्स, उनके लिए भी वर्क कर रहे हैं. और बहुत सारे हेल्थ एरिया में, या हम देखा एजुकेशन की फील्ड में भी NGOs वर्क कर रहे हैं. सो व्हाट इज द ब्रॉड रोल ऑफ NGOs इन आवर सोसाइटी, दैट वी विल स्टडी. So basically we saw that they are working as a second arm of the government basically, so that the services of the government, the schemes of the government जो भी government launch करता है, that can reach the needy section of society. So obviously they are promoting good governance also. They are working for the upliftment of the marginalized section of society. They are active to encourage education, particularly among the section of population which has remained unbenefited. See, there are a lot of people who are so well off that they are able to gain the fruits of development, and they have actually access to good education and health services. But there are a lot of marginalized people in our society, the poor people who have remained unbenefited from the fruits of development. So they are actually working for the upliftment of those marginalized people by the measures adopted by the government. The education of girls के लिए work करते हैं, other deprived people, particularly the scheduled caste and scheduled tribes के लिए work करते हैं NGOs. That has been their target objective. Then obviously they are also involved in social mobilization. Social mobilization as in like, see, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो गवर्नमेंट लेता है अपने पार्ट पर, बट उसका जो उससे रिलेटेड अवेयरनेस नहीं होती है, उससे रिलेटेड हम लोगों को पता नहीं होता. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में वर्क कर रहा है, बट उस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, वहाँ के लोगों को ही नहीं पता है. या लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किसी भी ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, या कोई भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने दिया, बट उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लोगों को पता ही नहीं है. देयर इज नो अवेयरनेस रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ सर्विस दैट माइट बी फंक्शनिंग इन दैट एरिया. सो द रोल ऑफ NGOs इज बेसिकली टू मोबिलाइज द पीपल फॉर अ पर्टिकुलर कॉज
और फॉर अ पर्टिकुलर स्कीम और फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस, लोगों को मोबिलाइज करके, सोशल मोबिलाइजेशन करके लोगों को उस पर्टिकुलर बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाने का काम ये करते हैं, ठीक है। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में भी एनजीओज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर और कैलामिटी। Natural calamities, they have played an active role in relief and rehabilitation efforts, in particular providing psychosocial care and support to the disaster affected children, women and men. तो जो डिजास्टर अफेक्टेड चिल्ड्रन, वीमेन एंड मैन होते हैं उनको रेलोकेट करना, उनको प्रॉपर तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ डिजास्टर और एनी काइंड ऑफ कैलामिटी, बिकॉज वी नो दैट हमारे कंट्री इज़ अ वेरी डिजास्टर प्रोन कंट्री, वेदर इट इज़ फ्लड और एनी काइंड ऑफ साइक्लोन, इस टाइप के disasters or calamities होते रहते हैं, हर साल होते हैं, especially in the coastal areas. So these NGOs then become active in those crisis times, and they provide psychosocial care and support. Even material support and care is provided to the children or women and men who are affected by these disasters. They help in relocating them, providing them shelter, providing them food and other such material needs. बेसिकली अभी भी कोविड-19 के टाइम पे हम देख रहे हैं, वी आर कंट्रीज फेसिंग क्राइसिस एट टाइम्स, सो देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज व्हिच आर वर्किंग and which have worked even during the lockdown periods and other periods to even उनके migrant जो workers थे उनको shelter या food provide करने के लिए, health services provide करने के लिए बहुत सारे NGOs हैं जो सामने आए and they worked for the welfare of the society. सो ये है बेसिकली NGOs का जो मेन जो काम होता है, ठीक है। तो डिजास्टर के टाइम पे, किसी टाइप की कैलामिटी या क्राइसिस के टाइम पे, लाइक अभी जो एपिडेमिक चल रहा है उसमें भी बहुत सारे NGOs के रोल बहुत प्रोमिनेंटली बाहर निकल कर आए हैं. सो दिस इज देयर एक्चुअली मेन रोल. Okay, they are also working for women welfare, like for example in our country there are a lot of NGOs working for the welfare of women like सेवा साथन, एकलव्य, दिशा, ठीक है. एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप है जो एनवायरमेंट के काम कर रहा है, अग्रणी फाउंडेशन है. दीज आर वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर women welfare and also for the environment conservation. NGOs, what they have done apart from all this, they have significantly influenced the development of laws and policies on several important and social developmental issues. Like कौन कौन से particular areas में NGOs ने अपना significant role किया है, even to force the government or influence the government actually of the day to form the policies, public policies, इस तरीके के public policies form करो which will benefit the people. तो ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं लेजिस्लेशन के जहां एनजीओज ने रोल प्ले किया है, सॉरी. Like for example, to bring out the legislation for right to information, there were a lot of NGOs which had actively pushed for this particular legislation, and they had actively pushed the government, pressurized the government to bring out such a legislation so that a transparency and accountability in the system of governance could be created. Then juvenile justice से related laws में भी NGOs बहुत actively involved है कि किस तरीके के laws, juvenile justice क्या होता है, any kind of justice which is related to the under 18 children. Okay, because हम देखते हैं कि under 18 age group में भी बहुत सारे children होते हैं, they are involved in many kind of heinous crimes. Okay, heinous criminal activities में like rape, रॉबरी वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं अंडर 18 चिल्ड्रन. उनको किस तरीके से टैकल करना है, बिकॉज दोज चिल्ड्रन आर हैव नॉट बीन एक्सपोज टू द ट्रू एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी. तो उनको जो एक्चुअली जस्टिस देना होता है, दैट हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम एन अडल्ट जस्टिस. ओके, बिकॉज अडल्ट इज अवेयर ऑफ the societal exposure but the juveniles are not. Okay, so basically उनको ऐसे reforms लाने चाहिए, juvenile justice reforms जो होते हैं, कि जो children हैं under 18 if they have committed any kind of such crimes तो उनको इतना harsh punishment ना मिले, whereas उनको इतना psychological support मिले so that they are able to come out of their criminal mentality. So juvenile reforms अलग टाइप के होते हैं. Juvenile justice is a separately totally different topic, और उस तरीके से उसको डील करना आता है. यू हैव टू ट्रीट देम अदर देन द वे यू ट्रीट द अडल्ट्स. सो बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, एंड उससे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स होते हैं उसमें भी एनजीओज बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरीके के सजेशंस या इनपुट्स देते हैं ताकि एक अच्छा लेजिस्लेशन आ सके सोसाइटी के लिए. देन ऑब्वियसली एंडिंग कॉर्पोरल पनिशमेंट इन स्कूल्स, एंटी ट्रैफिकिंग लॉज के लिए भी काम करते हैं एनजीओज. दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन carrying out, or you can so bringing out a legislation or law in a country, but they are actually giving inputs to the government to work in this front. Forests and environment conservation के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं एनजीओज.
विमेन, एल्डरली पीपल, पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए काम करते हैं, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट of the development induced displaced people, to name a few. So basically these are the various domains in which the NGOs have worked. They work for the conservation of wildlife and environment. Women, elderly people के welfare के लिए काम करते हैं, people with disability के लिए काम करते हैं, then obviously rehabilitation and resettlement के लिए भी काम करते हैं during disaster and any such kind of crisis situation. They improve the governance performance. Why? How they do that? They broaden the government's accountability, okay, by questioning the government, by forming pressure groups, and actually questioning what the government is doing, that is to hold the government accountable, is by spreading awareness about the government's initiatives, is the work of NGOs. देन उनके फंक्शनिंग में एक टाइप का इनोवेशन होता है, दे कम आउट विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर पर्टिकुलर गवर्नेंस प्रॉब्लम्स, एंड एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होता है गवर्नमेंट का एनजीओज के काम करने का, बिकॉज गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट हैज़ टू फेस द पीपल, फेस द मैंडेट ऑफ द पीपल एवरी 5 years, ओके. तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ करप्शन एक्टिविटीज ऑल्सो. बट जो एनजीओज का फंक्शनिंग होता है वो बहुत इनोवेटिव और बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल, दे आर अकाउंटेबल फॉर द पीपल बट नॉट इन द मैनर गवर्नमेंट इज. सो उनका एक अप्रोच जो होता है वर्क करने का बहुत फ्लेक्सिबल होता है, and that is shown in the policy making also. They bring their own independent expertise and research teams as far as any kind of policies are concerned. ओके, गवर्नमेंट अगर अपनी तरफ से एक एक्सपर्ट या रिसर्च लॉ नहीं भी लेकर आ रही है, सो इनकी फंक्शनिंग ऐसी होती है एनजीओज की, दैट दे आर ब्रिंगिंग देयर इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज एंड रिसर्च in any kind of law or policy which the government can come out with. Okay, they enhance the efficiency of the delivery of many services also at the local level through the involvement of residents. The main agenda of NGOs is to involve or to promote people's participation in governance. Okay, and that is how also they are successful in efficient delivery of various services, because they are involving local people in the governance process. They are promoting the participation of local presidents in the governance. Okay, so these were the broad role of NGOs, how we have seen that they are working for the vulnerable and the most needy section of the society, the women's, the SC/STs, the elderly people, the children. उनके welfare के लिए काम करते हैं. डिजास्टर में उनका रोल होता है, सोशल मोबिलाइजेशन में होता है, टू प्रमोट गुड गवर्नेंस, अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. उनका एक जो टारगेट सेक्शन होता है सोसाइटी का वो होता है. फिर किस तरीके से वेरियस काइंड ऑफ लॉज में भी गवर्नमेंट को इनपुट्स देने के लिए एनजीओज वर्क करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल भी एक एनजीओज का एक रोल है. फिर हम देखते हैं अब की बेनिफिट्स क्या हैं. बेसिकली गवर्नमेंट तो अपनी जगह काम कर रही है, बट ऐसे अलग से स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या हैं एनजीओज. सो बेसिकली स्पेसिफिक बेनिफिट की अगर हम बात करेंगे एनजीओज की, सो एनजीओज आर एक्चुअली वर्किंग फॉर analysis and awareness raising and advocacy. Okay, they are acting as a voice for people both on a representative and self-appointed basis. That is, even if they are representing the government, or they are even representing the people, or they have themselves given them that mandate, but they are working on this front to create advocacy and awareness raising. Okay, रिसर्चिंग में इन्वॉल्व होते हैं. लाइक हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिसमें एनजीओज हैं गवर्नमेंट को इनपुट प्रोवाइड करते हैं, अपने इंडिपेंडेंट एक्सपर्टीज या रिसर्च टीम्स को डिप्लॉय करके एक पर्टिकुलर पब्लिक पॉलिसी को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं, एंड दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. सो दे विल speak on the behalf of people as to what is the wish, or what is that the people want, and according to the wishes of the people they are giving inputs to the government so that a well researched policy aa sake public interest mein. Okay, then they are analyzing and informing the public about the various issues. Okay, like for example अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर गवर्नेंस का प्रॉब्लम है या वाटर के इश्यूज हैं वाटर डिलीवरी में, so they will come up with a policy, they will come up with an innovative solution, and they will inform the public about that problem, create awareness amongst the public, and also will give research and expertise input to the government to work on the public interest. किसी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो, वहाँ अगर कोई एनजीओ है आप उसको अप्रोच कर सकते हो, और उनका जो फंक्शनिंग का तरीका होता है वो अलग होता है. ठीक है,
Then they are mobilizing citizens action through media campaigns and other forms of activism. They are lobbying business leaders and even the policy makers. So उनका जो reach होता है, it's not just limited to the government level, but they are also lobbying business leaders and policy makers also to work for the public interest. Obviously, then they are working in minimal cost to reach the poor and the needy. बिकॉज उनका वर्किंग का जो अप्रोच होता है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, तो जो वर्किंग कॉस्ट होते हैं एनजीओज के वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. देन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए काम करता है. इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर एंड अ फैसिलिटेटर, okay, between the governments. It acting as a bridge between the public and the government. NGOs are acting as a bridge between public and the government, so obviously they are working for the conflict resolution also. Capacity building efforts में भी involved होते हैं. They are providing education, training and information to the various section of people, okay, उनको एम्पावर करने के लिए. एंड ऑल्सो की कैपेसिटी बिल्डिंग किसी भी टाइप की सिचुएशन को डील करने के लिए जो कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर एरिया डिजास्टर प्रोन है, फ्लड प्रोन एरिया है, तो वहाँ के लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना, टू ट्रेन देम, टू मोटिवेट देम, उनको एजुकेट करना कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या डिजास्टर सिचुएशन है, फ्लड सिचुएशन से कैसे टैकल करना है. तो वो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग, जो कि किसी भी एरिया में किया जा सकता है. ठीक है. डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियसली वी आर इन्वॉल्व. ऑपरेशनल डिलीवरी ऑफ एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट एंड इवन द सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं. लाइक हमने डिजास्टर के टाइम पे देखा कि बहुत सारे एपिडेमिक के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कितने सारे फूड हो गया, वाटर हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टफ होता है डेली लाइफ का, उनकी डिलीवरी अगर करनी है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ पीपल, माइग्रेंट्स जो थे, जैसे वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे थे, उस टाइम पे उनको जितने भी एसेंशियल ह्यूमैनिटेरियन सोशल सर्विसेज की नीड थी, देयर वर वेरियस एनजीओज व्हिच केम फॉरवर्ड एंड हेल्प देम टू प्रोवाइड शेल्टर एंड अदर फूड एंड अदर सच नीड्स. ओके. then they are flexible and they are responsive. ओके. जो उनका वर्किंग का तरीका होता है वो क्या होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं. एंड दे आर रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. ओके. now what are the various NGOs which are working at present in India? so we will study about 3 or 4 NGOs, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा. you must even go and read more about these NGOs so that you get a glimpse of what is their function is. Okay. so the first NGO, there are a lot of other NGOs also. Here we are just talking of 3 or 4 NGOs which are very important and very famous as far as इंडिया इज कंसर्न, जो इंडिया के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं जो इंडिया में काम करते हैं, जिनको फॉरेन फंडिंग मिलती है या जिनको फॉरेन गवर्नमेंट्स फंडिंग करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे दूसरे एनजीओज भी हैं इंटरनेशनल लेवल के जो इंडिया में काम कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे इंडियन एनजीओज भी हैं. तो जैसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो हम उनसे डील करेंगे, जो 3-4 मेन हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं. लाइक द फर्स्ट इज अ प्रथम. ओके. Pratham is what? It's a leading NGO which are based in Mumbai, and it's amongst the largest in the country. What is the mandate? It works for the improvement of underprivileged children as well as providing preschool education. So this is the work of this Pratham. Okay, now what is CRY? ये बहुत ही famous NGO है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा. इसका नाम है Child Rights and You. It is an NGO which works with the aim of bringing forth the rights of children in the country, including food, education and even health for them. ऐसे बहुत सारे डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन होते हैं, हमें पता होता है. इनफैक्ट हम रोड्स वगैरह में भी देखते हैं कि कितने सारे डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हैं जिनको फूड या एजुकेशन या हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं. दे आर पुअर पीपल. उनको बेसिकली हेल्प करता है चाइल्ड राइट्स एंड यू. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे बहुत सारे डेस्टिट्यूट या ऑर्फन बच्चों की हेल्प करता है. ठीक है. तो ये एक एनजीओ हो गया. फिर हेल्पेज इंडिया एक एनजीओ है, एंड इट इज़ वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ एज्ड एंड द एल्डरली इन द कंट्री. उनको किस तरीके से मॉनिटरी बेनिफिट्स या शेल्टर वगैरह या जिस टाइप के ओल्ड एज में जिस टाइप के एक केयर चाहिए होती है ओल्ड एज एंड एल्डरली को, वो प्रोवाइड करता है. इट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ सोशल वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ द एल्डरली. देन सम्मान फाउंडेशन इज एन एनजीओ बेस्ड इन पटना. इट हैज़ बीन established for empowering the people who are below the poverty लाइन. ओके. सो ये हो गया. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनजीओज हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं. इसके सिवा भी बहुत सारे एनजीओज हैं जिसके बारे में आपको जाके पढ़ना चाहिए कि और कौन कौन से एनजीओज हैं. उससे पता चलता है कि एनजीओज का एक पूरा जो वर्क है वो क्या होता है, किस फील्ड्स में एनजीओज बेसिकली काम करते हैं, हाउ फार दे हैव बीन सक्सेसफुल. ह्यूमन राइट्स एक बहुत मेजर एरिया है जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए बेसिकली एंड टू कंजर्व द ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स, एनजीओज काम करते हैं, वेदर इट माइट बी एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी.
Okay, now what are, now after studying about what is an NGO और बाकी सारी चीजें, now we will study what are the issues which are facing the NGOs. Okay, like there are a lot of problems even which are going on or clashes which are going on between the NGOs and the government, कि government को भी बहुत सारे issues हैं NGOs के functioning से basically, because NGO को जब establish किया जाता है तो उनका objective होता है welfareist and लोगों को serve करना, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया है कि एनजीओज बहुत सारे ऐसे इश्यूज में इन्वॉल्व हैं विच आर नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एंड दे आर इवन इन्वॉल्व इन द एंटी नेशनल एक्टिविटीज ऑल्सो. सो उस कौन कौन से वो इश्यूज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो इशू है वो है लैक ऑफ फंड्स का. लिमिटेड सोर्सेज होते हैं फंडिंग के, एंड अमंग दोज विच आर अवेलेबल इट इज़ डिफिकल्ट टू गार्नर सफिशिएंट फंड्स. जो डोनर्स होते हैं, जो डोनेट करते हैं एनजीओज के, दे कीप शिफ्टिंग देयर रिलीजन्स एंड दे विथड्रॉ देयर फंडिंग. तो एक फंडिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो इतने वेल टू डू एनजीओज नहीं है बिकॉज एक प्रॉपर सोर्स है, प्रॉपर चैनल ऑफ फंडिंग नहीं मिल पाती है एनजीओज को कभी कभी, तो ये एक प्रॉब्लम होता है. देन पुअर गवर्नेंस एनजीओज के अंडर होता है. दे परसीव द गवर्नमेंट्स एज हिंडरिंग एंड थ्रेटनिंग देयर गोल्स. ओके, बिकॉज हमने देखा कि एनजीओज और गवर्नमेंट के बीच में भी कभी कभी क्लैशेस होते हैं, क्योंकि एनजीओज क्या सोचते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हैज कम आउट विद वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेशंस एज वी हैव सीन एफसीआरए एंड फेमा वगैरह के थ्रू गवर्नमेंट ट्राइज टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ दीज एनजीओज, because many a times these NGOs what they do is they take funds from the government or they take funds from other non-government entities, but they are involved in you kind of stalling the developmental process of the government itself. Okay, because they are working for their own ulterior motives. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ NGOs को एक कवर के लिए फॉर्म करते हैं टू फॉर देयर इलीगल एक्टिविटीज़. लाइक फॉर एग्जांपल NGOs ऐसे बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्म किए जाते हैं जो इवन मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग और अदर साइड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं. तो ऐसे बहुत सारे, लाइक हमने देखा कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग वाले लेक्चर में देखा था कि ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज या शेल कंपनीज का फॉर्मेशन होता है सो दैट मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सके. मनी लॉन्ड्रिंग को आप ML के हिसाब से समझ सकते हो, ML इज ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग ओनली. सो मनी लॉन्ड्रिंग या अदर सच ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज करने के लिए भी बहुत सारे शेल कंपनीज का फॉर्मेशन होता है. तो even these NGOs are misused by some anti-social elements to carry out their objective of organized crime and money laundering activities. तो ऐसे भी बहुत सारे NGOs हैं which are not complying with the government regulation because their objective is ulterior. ओके, बहुत सारे NGOs बहुत रॉन्ग ऑब्जेक्टिव के लिए भी बनाए जाते हैं सो दैट इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो हैं वो किए जा सके. तो NGOs का मिसयूज़ भी बहुत होता है. NGOs में जो फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो उनकी फंडिंग तो कर देते हैं सो दैट वो NGO तो है, वो फंक्शन तो कर रहा है, बट दे आर मिसयूजिंग दोज NGOs फॉर देयर ओन अल्टीरियर पर्पसेस, या इलीगल कामों के लिए NGOs का भी यूज़ होता है. तो दिस इज ऑब्वियसली वर्किंग फॉर, it is not good for the integration of the country, because if these NGOs are taking funds from the government and other such, then they should work for the welfare of the people and not for other anti-social या anti-national activities. तो ये एक इशू है आजकल NGOs के साथ. ओके, कि जैसे शेल कंपनीज वगैरह का फॉर्मेशन होता है टू सो दैट टू कवर अप फॉर दी अदर इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग अदर सारी एक्टिविटीज़, उसी तरीके से ये NGOs का भी फॉर्मेशन होता है. तो NGOs और गवर्नमेंट्स क्या करते हैं इन रिटर्न, ऑब्वियसली whenever government comes to know about this, government tries to regulate them, but there are many NGOs who do not comply with the government regulations. या बहुत सारे NGOs होते हैं जो टैक्स इवेजन करते हैं, या बहुत सारे ऐसे NGOs हैं who are not very accountable and transparent regarding their funding mechanism, कि उनको इतने फंड्स मिल कहाँ से रहे. अगर उनको फॉरेन या एनिमी कंट्री भी, ऐसे बहुत सारे फॉरेन या एनिमी कंट्रीज हैं लाइक पाकिस्तान एंड ऑल दिस who are giving funds to these NGOs and then they are carrying out their illegal activities on behalf of these NGOs. So ये अगर NGOs ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे अपने फंडिंग मैकेनिज्म को लेके, या पूरी तरीके से गवर्नमेंट के लॉज के साथ कंप्लाई नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली देन गवर्नमेंट विल क्रिएट हिंड्रेंस इन देयर फंक्शनिंग. ओके, then there should be a healthy linkage between the government and NGO. NGOs, they have come under scrutiny due to their evading credibility and lack of accountability. So of the late what has happened is, पहले तो उनको फॉर्म किया जाता था बहुत ही एक अच्छे वेलफेयर पर्पस के लिए, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि these NGOs have been misused. That is why they have come under the scanner of evading credibility and even their lack of accountability. Non-accountable, non-transparent, undemocratic functioning के लिए भी जाने जाते हैं NGOs.
CBI records filed in the Supreme Court show that only 10% of the total जो registered NGOs हैं, because we saw that जितने भी legal NGOs formed होते हैं, they have to register themselves as either societies, trusts or charitable organizations. But only 10% ऐसे registered NGOs हैं who have filed their annual financial statements. Obviously, you have to comply with the tax laws of the country, that how much you are earning, from where you are getting your funds, उतना वो सब आपको obviously show करना पड़ेगा, and you have to file your taxes. But there are only 10% of the total registered NGOs who have filed their annual financial statements. So obviously there is something fishy which is going on if you are not filing your taxes on time and evading your taxes on time, evading your taxes. So basically these are the various issues which are coming up with these NGOs. Limited resources होते हैं, they lack technical and organizational capacities, weak capacity building होती है, poor human resources होते हैं. These are the big impediments in fundraising, governance, leadership and technical areas. में बहुत सारे ऐसे impediments आते हैं because resources नहीं है, इतना technical expertise नहीं है as far as the NGOs are concerned. NGOs have acted as a cover for organized crime also in the past, and they are often seen as fronts for the fundamentalist causes also. जितने भी foreign funded NGOs होते हैं, that is why government is against the foreign funding of these NGOs, because अगर कोई बाहर की country इन NGOs को fund करती है, obviously उसका कोई ulterior objective होता है to disturb the security situation, and it is basically अगर बाहर की country fund करती है तो उनका यही रहता है कि somehow to carry out an ulterior objective which is not लीगल. तो जितने भी फॉरेन फंडेड NGOs होते हैं, they have been responsible for organizing agitations and even scuttling the developmental projects in India. So that is why government is against foreign funding of these NGOs, okay, because they have even acted as a cover for organized crime in the past. Now what is the issue between the FCRA and NGOs? We have seen that the दो laws हैं इंडिया में जो डील करते हैं NGO से. फर्स्ट हम देखा FEMA and दूसरा हम देखा था FCRA. Now what are the provisions of this FCRA? That according to it, any NGO that accepts foreign contribution, it has to mandatorily register itself with the Home Ministry, and such contributions can only be accepted through designated banks, that so that कोई भी टाइप का illegal money laundering या कोई भी organized criminal activity इन NGOs के थ्रू ना हो सके. Okay, the NGOs has to report to the central government any foreign contribution within 30 days of its receipt. Okay, कोई भी आप एक company will just act as a company और उसको आपने fund करके किसी भी टाइप का illegal activity आप करवा सकते हो ना. तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि इस तरीके का कोई भी फॉरेन फंडेड NGO हो तो वो हमेशा गवर्नमेंट के स्कैनर में रहे. ठीक है. They need to file annual reports also with the Home Ministry. It must also report with the amount of foreign contribution, कितना उस NGO को मिला, its source, how it was received, the purpose for which it was intended, and manner in which it was utilized. So this is a very good step, okay, so that एक ट्रांसपेरेंट और एक अकाउंटेबल NGO क्रिएट हो सके एंड कोई भी टाइप का illegal activity ना हो सके as far as the NGO is concerned. In case of non-compliance with the provisions of FCRA, because these are all provisions of the Foreign Contribution Regulation Act, कि उसके अंदर ऐसे ऐसे strict penal provisions बनाए हैं so that कोई भी NGO को misuse ना कर सके foreign governments. Okay, government can penalize that NGO. If these NGOs don't find annual returns, then government can issue a show cause notice. And as far as using these provisions of the FCRA, licenses of around 220,000 NGOs have been cancelled by the central government after they were found violating the various provisions of the FCRA. Hence, those NGOs were barred from receiving any foreign funds. So we saw that कुछ फिशी चीज़ें पाई गई, कुछ ऐसे इलीगल चीज़ें पाई गई in the functioning of these NGOs, that so many licenses of 20,000 NGOs were cancelled. Okay, so इस तरीके के provisions बनाए गए हैं so that एक strong legislation हो सके to regulate the functioning of these NGOs. So basically ये है. ठीक है. अब हम देखेंगे फ्यूचर क्या है इन NGOs का. हमने देखा सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई क्या क्या इश्यूज हैं जो इन NGOs के साथ हैं, कि भाई इनका जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी बार बहुत बड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, नॉन अकाउंटेबल होता है. कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए भी NGOs का यूज़ किया जाता है. ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स भी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इन NGOs का यूज़ करते हैं. ठीक है. फिर कौन कौन से और इश्यूज़ हैं कि फंडिंग की लैकिंग होती है, कभी कभी लिमिटेड टेक्निकल और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं इन NGOs के पास में, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इतनी नहीं होती है.
फंड्स का प्रॉब्लम है, और बाकी हमने देखा कि फॉरेन फंडिंग का क्या प्रॉब्लम है, वो सब देखा। हमने देखा बेनिफिट्स क्या है इन एनजीओज के, इनका रोल क्या है सोसाइटी में, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। एंड में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर स्टडिंग द इश्यूज ऑल्सो विच आर फेसिंग दीज एनजीओज, व्हाट आर द फ्यूचर ऑफ दीज एनजीओ। सो बेसिकली एक स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना चाहिए to keep a watch on the financial activities of these NGO and voluntary organizations. That is the need of the hour. Then government should regulate or recognize the NGOs as active partners in development, playing the role of facilitator. Okay, you have to understand that government should recognize that these are not hindrance, these are not something who are blocking the government activities, but government should think that these are those parallel organizations. If we link with them, if we develop a healthy linkage with these NGOs, then they can become active partners of development, because there are a lot of role in community mobility. NGOs, they play a lot of good role as far as community mobilization and community awareness and other such active essential delivery of services are concerned. So using these NGOs, government can even promote very healthy development in the country. So government should consider the NGOs as active partners in the developmental process and to play the role of facilitator in promoting good governance in the country. तो गवर्नमेंट को उस तरीके का रोल देना चाहिए एनजीओज को बेसिकली, ठीक है। दे हैव अ रोल टू प्ले इन द डेवलपमेंटल प्रोसेस वायर देयर पार्टिसिपेटरी रोल, कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड रिसर्च. For a more nuanced development, it is important that NGOs work as a think tank also. बिकॉज बहुत सारे थिंक टैंक्स गवर्नमेंट फॉर्म करता है, सो दैट एक एक्सपर्ट और एक रिसर्च्ड ओपिनियन को डेवलप किया जा सके बिफोर एनी पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग इज डन. सो गवर्नमेंट एनजीओ शुड वर्क as even think tanks and provide inputs to the government, and in close collaboration with the same, it should provide alternatives to the various problems which the government is facing. तो इस तरीके का रोल एनजीओज को प्ले करना चाहिए. The approach that the NGOs follow at present is that of a hardware, basically just to build infrastructure and services instead of actually working for the on the human capital. because दो तरीके की चीज़ें होती है, एक तो होता है कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं बाकी चीज़ों पे, एक होता है एक सोशल कैपिटल डेवलप करना. सोशल कैपिटल डेवलप करना, लोगों का ट्रस्ट डेवलप करना, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सो दैट पीपल आर एबल टू ट्रस्ट देयर गवर्नमेंट फंक्शनरीज. सो बेसिकली टू एम्पावर द पीपल लोकली, सो दैट पीपल का रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नेंस में वो बढ़ सके, पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, एंड जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में वो ब्रिज हो सके. सो एनजीओ शुड वर्क ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. They need to adapt a more flexible and dynamic approach which is sustainable to the community as a whole. So this is the future of NGOs. First is obviously हमने देखा कि बहुत टाइम ऐसा होता है कि बहुत नॉन ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग होता है NGOs का, तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए. जैसे हमने FCRA के प्रोविजंस यहाँ पढ़े कि FCRA के प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने इन द रिसेंट पास्ट बहुत स्ट्रिक्ट किया है. फर्स्टली बहुत लीनियंट थे, बट अब फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस या पीनल प्रोविजंस लगाए हैं FCRA में. इस टाइप का एक और स्ट्रिक्ट विजिलेंट रेगुलेटरी सिस्टम लाना चाहिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाना चाहिए, सो दैट फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं एनजीओज की उन पे एक स्ट्रिक्ट विजिलेंट या वॉच रखा जा सके, ठीक है. फिर गवर्नमेंट शुड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज एनजीओज एज एक्टिव पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, और उनके साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट को काम करना चाहिए. NGOs को थिंक टैंक का भी एक प्रोफाइल देना चाहिए, सो दैट दे कैन कम आउट विद एक्सपर्ट एंड रिसर्च ओपिनियन एंड इनपुट्स ऑन अ पर्टिकुलर पॉलिसी. फिर किस तरीके से गवर्नमेंट को या NGOs को लोगों का एम्पावरमेंट के लिए एंड इवन टू बिल्ड सोशल कैपिटल एंड ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, उस फ्रंट में भी NGOs को काम करना चाहिए. तो ये है पूरा रोल NGOs का. ये सब कुछ जो हमने एक डिटेल NGOs के बारे में पढ़ा. Next जो topic we will be taking up is the issue of communalism. Basically there are three issues: communalism, secularism and regionalism. तीनों issues के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे and they form part of your social issues paper 1. NGOs जो था वो paper 2 का part है, but जो communalism, secularism और regionalism के तीन topics हैं, they are somehow interrelated only. हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. That forms part of your paper 1. Okay, so that we will take up in the next lecture. Thank you so much.